Hello to all of you. This side Gitika, your German tutor. So basically, today what we're gonna discuss about the Goethe exam. In today's time, if I say, जैसे अगर आप एज अ नर्स के फॉर्म में जाना चाहते हो या आप जर्मनी में वर्क करना चाहते हो, कोई भी रीजन है, तो बेसिकली अगर आपका बेसिक मोटिव है इन गोइंग टू जर्मनी एंड वहां पर जाकर अपना आपने सारा सॉल्व करना, लाइक जॉब पर्पस के लिए जाना, किसी भी फॉर्म में जाना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है कि आप गोइथे एग्जाम लाइक जर्मन लैंग्वेज पहले सीखे, गोइथे एग्जाम में अपीयर करके आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर जर्मनी इन टर्म्स ऑफ योर जॉब और एनी ऑफ द रीजन. So first of all, let me explain you that how many levels are there in the German language. In German language, we are having total six levels: A1, A2, B1, B2, C1 and C2. अब आपका ये जो A1 A2 लेवल होता है, ये टोटली बिगिनर लेवल होता है. मतलब अब इसमें बहुत बेसिक चीजें कवर करते हो, अल्फाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, वीक्स हो गए, प्रोनाउंसिएशन पार्ट हो गई कि आपने कैसे प्रोनाउंस करना है जर्मन लैंग्वेज में. तो हम ये सारी बेसिक डिटेल्स जो होती हैं ये जर्मन लैंग्वेज में मतलब A1 लेवल में हम कवर करते हैं. ठीक है. A2 अगेन आपने जो ग्रामर टॉपिक्स A1 में किए हैं उसको थोड़ा एडवांस फॉर्मेट में आप A2 में करते हो. B1 में आप एक अच्छी कम्युनिकेशन पार्ट पे आते हो. जैसे सपोज इट अगर मैं आपके सामने कोई चैप्टर रीड करूं तब उसकी बेसिक समरी दे पाओगे. एंड B2 लेवल में क्या होगा कि जैसे द वे वी आर कन्वर्सिंग विद ईच अदर इन द सेम मैनर यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन इन द जर्मन लैंग्वेज. क्या नाउ बेसिक इफ यू वांट टू गो नाउ फॉर द जर्मनी, अगर आप जॉब पर्पस के लिए स्पेशली जाना चाहते हो तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है? गोइथे एग्जाम. अब ये गोइथे एग्जाम एक्चुअल में क्या हो, ये अब जैसे सपोज इट यू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, now you want to go to Canada, UK, USA, wherever, any other country. So they're gonna ask you for a verification that yeah, you have done, you are good in English, so that you can have a basic communication in their country. So what exam you're gonna appear for, like IELTS or PT? That's it. In the same manner, in German language, if you are going to appear for the Germany, you want to basically do the job in Germany. For that, they're gonna ask you that did you have any certification for German language? So Goethe exam is a certification for which you have to be appear before going to Germany. Now, जो आपका ये गोइथे एग्जाम होता है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है. अब जैसे मैंने आपको बताया 6 लेवल्स होते हैं, तो सपोज करो अगर आपने B1 लेवल तक किया है, यू आर वुड बी हैविंग 60% ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर. अगर वही आपने B2 तक किया है तो वो आपके पास 100% जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाती है. आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट शो दैट आई हैव डन लाइक डन विद द B2 लेवल ओवर हियर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेटली आपको ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाता है इफ यू नो द जर्मन लैंग्वेज टिल B2 लेवल. सो यू कैन जस्ट गो विद एनी ऑफ द लैंग्वेज नेक्स्ट, एनी ऑफ द लेवल बेसिकली in terms of job even though. Nextly, suppose it as a nurse, like आप वहां पर जाना चाहते हो, you want to work it for the nurses as well in terms of hospitality, in terms of you want to work in the hospital in any of the form. In that also, the B1, B2 level certification is the necessary part in this. Now, let's come to the exam pattern for Goethe exam. First of all, let me clear to you that here also you would be having the four modules as you have in your IELTS: reading, writing, listening, and speaking. So first of all, these the basic four modules you're gonna cover. After doing with reading, writing, listening, आप क्या करोगे? जैसे suppose it comprehension part है, आपको एक passage given होगा, you have to give to the answer of that questions. Writing में क्या होगा? आपको topic given होगा, you have to write it down. Listening में क्या होगा? एक ऑडियो प्ले की जाएगी, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. एंड स्पीकिंग में फेस टू फेस कन्वर्सेशन. तो ये सेम पैटर्न होता है आपका जर्मन लैंग्वेज फॉर गोइथे एग्जाम एज वेल. हम इसमें बेसिक ग्रामर को करते हैं. जैसे हमारे बेसिक ग्रामर क्या आ जाती है? नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स,
एडजेक्टिव, कॉन्जुगेशन, ये सारी आपकी क्या है, बेसिक ग्रामर पार्ट है। पहले आप बेसिक ग्रामर करना सीखते हो कि हम ग्रामर पार्ट को जर्मन लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। नेक्स्टली आपके पास आता है वोकैबलरी। बेसिकली इन योर जर्मन लैंग्वेज यू गोना कवर अराउंड 800 वोकैब वर्ड्स। ये जो 800 वोकैबलरी वर्ड्स होते हैं हम आपको एक पार्ट में नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में कराएंगे, ताकि जब आप इसको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके सीखोगे यू वुड बी एबल टू स्पीक इन जर्मन एंड you would be know the pronunciation and the meaning of that German languages, German words as well. Clear? And exam format and the section part. So basically, what we do is जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है फ्रॉम द डे वन, आपका जो फर्स्ट 5 डेज रहते हैं वो प्रॉपर इंट्रोडक्टरी क्लासेस रहती हैं, जिसमें हम सिलेबस को समझते हैं, क्या क्या सिलेबस में पैटर्न है, क्या ग्रामर टॉपिक्स हैं, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स क्या होते हैं, हम बहुत बेसिक चीजें की यहाँ पे करते हैं। पर जैसे ही आपका सेकेंड वीक आ जाता है, सेकेंड वीक से वी गोना स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन फॉर गोइथे एग्जाम एज वेल। सो अगर आप गोइथे एग्जाम प्लस जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, लाइक इन अ कंबाइंड फॉर्म, सेकेंडली जब आपका B2 लेवल कवर हो जाएगा यू नॉट नीड टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर गोइथ एग्जाम, बिकॉज वी वुड बी प्रिपेयरिंग यू एट दैट मच लेवल that you can directly appear for Goethe exam without taking any other classes, because we prepare you for the Goethe exam as well. And now, if you're having any idea, or if you want to just, go with the German language, you are having any plans in the future plans, or you're planning to go abroad to work in the Germany, then do contact the Brandify Education for your German classes and book your demo slots now for further information. Thank you.